मैक्सिमम मिनिमम। तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे वर्किंग रूल एक बार देख लो आप। व्हाट इज द वर्किंग रूल? इफ यू नो द फंक्शन, then use the function and find out the value of PQRST. Then second step, equating P and Q to 0, we get the stream points or stationary points. We can use those stationary points in RT minus S square. If both are greater than 0, function is minimum. If one is greater than 0, another one is less than 0, function is maximum. So I have one question here. I'm writing this question. This question is a very lengthy question, but the solution is very small, and it's a purely engineering question. You can see a rectangular box. A rectangular box. Open at the top. Open at the top. Open at the top is to have a volume of 32 cubic feet. 32 cubic feet. Volume is 32 cubic feet, comma, find the dimension of the box. Dimension of the box. Find the dimension of the box. Requiring least material. आज ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? हेलो, जोर से आवाज दीजिए, लाउडली। और कल से शायद आपके साथ, कल या परसों से एक और स्टूडेंट ज्वाइन होंगे आपके साथ, बिकॉज सिलेबस सेम है, तो मैं आपके साथ ही उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो हो सका तो पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल, आई विल मेक ए ग्रुप and I'll post the message, the timing about the class and which topic is going on. But if other students are joining now, you should not be late, okay? Because we can't wait for others. Whatever the time is given, we have to start our class according to our given time. So that's what, whatever the time is convenient, you should tell me. Okay, we will discuss before end of this class. First, what is the question? You can try to understand. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है, ओके, उसका वॉल्यूम है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 क्यूबिक फीट का वॉल्यूम है, और आपको उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड देयर डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल, मतलब कम से कम मटेरियल में एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना? कम से कम डायमेंशन मींस कम से कम लेंथ, कम से कम ब्रेथ और कम से कम हाइट। लीस्ट मटेरियल, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए? लीस्ट मतलब फंक्शन होना चाहिए मैक्सिमम, लीस्ट मटेरियल, फंक्शन आपका मिनिमम होना चाहिए, फंक्शन मिनिमम मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर आप करें तो ग्रेटर देन 0 आती, और आर की वैल्यू अगर आप करें तो लेस देन 0 आती, देन ओनली तो फंक्शन इज मिनिमम। नाउ वी कैन सी वन बाय वन द स्टेप्स। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, x comma y comma z are the length
or the length, comma, breadth, breadth and height, and height of the box, of the rectangular box. Okay ना? X, Y, Z को अपन length, breadth और height assume करें. Okay? And S is the total surface area of the box. अभी यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा अपने पास फंक्शन की वैल्यू क्लियरली नहीं है. वी हैव टू फॉर्म इट, वी हैव टू फ्रेम इट. वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में? हाउ मच वॉल्यूम इज गिवन? 32 क्यूबिक फीट. 32. और रेक्टेंगल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. It is equal to given already 32. From this you will get a relation, that is the value of z is equal to 32 by xy. इसमें से अपन एक z की वैल्यू निकाल. क्यों निकाल रहे हैं? Because our function PQRST में we are doing with respect to x, with respect to y, with respect to x 2 times, with respect to y 2 times, with respect to x and y, but nowhere we are differentiating with respect to z. So z को अपन निकाल देना है. ठीक है ना? ये तो z हो गया. उसके बाद आप देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, that is denoted with capital S. एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट. यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद इरेज कर देता हूँ. ये होता देखिए फॉर्मूला 2 इंटू LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट plus height into length. This is the formula. But in our question, our length is x, breadth is y. So 2 into xy plus 2 into yz plus 2 into xz होता. बट यहाँ पे क्या हो रहा? ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, मतलब एक वैल्यू को अपन कम ले रहा. डबल, ये सब डबल डबल होता. 2 LB 2BH 2HL, मगर ऊपर से खुला है, बल्कि ऊपर से यहाँ का एक डबल नहीं ले रहे. अगर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स को अज्यूम करें, सपोज अपना एक बॉक्स ऐसा है, देखिए ऐसा वाला कोई बॉक्स है. आप सिंपल एग्जांपल अगर आप समझे, घर में कभी स्वीट बॉक्स लेके आते हैं आप? ये घर में कोई लेके आता है स्वीट बॉक्स? मिठाई का डब्बा या नीचे का बॉक्स, वो फाइंड आउट कर रहे हैं असल. ठीक है? स्वीट बॉक्स का ऊपर का नहीं, नीचे का बॉक्स फाइंड आउट कर. एक ऐसा छोटा सा कम से कम लेंथ और कम से कम ब्रेथ और कम से कम हाइट का बॉक्स बना रहे जो 32 क्यूबिक फीट की कैपेसिटी का है. ठीक है? तो लेट अस कंटिन्यू. our question will be, so actually 2xy will come, but 2 is not there because it is open at the top. xy plus 2yz plus 2zx. Very important step this is. अब इसमें क्या करना है? We have to substitute their values. What? ये values पूरे s is equal to xy will be xy only. There will not be any change here. Plus 2 into y into z value is here. We have what? 32 by xy plus 2 into x we can keep as it is, and that z value will be 32 by xy. यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं. We can cancel those terms immediately. Okay, like that. Here what happened? Y cancelling. Here x will be cancelling. And then continuing this problem. S is equal to, if you cancel it and simplify, xy as it is plus 2 into 32 becomes 64. 64 by
x 64 by x plus 64 by y. Actually, this is our function value. यहाँ से अपना रेगुलर वर्क स्टार्ट करेंगे, मतलब पी क्यू आर एस टी का काम। अब तो मैं देखिए बता रहा हूँ एक के बाद एक। पी means partial differentiation of this x with respect to x. So that is equal to differentiation of x with respect to x becomes 1 into y plus ये 64 कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं डायरेक्ट लिखने के लिए। दिस इज द इरेजर। Yes. So we write directly -64 by 1/x differentiation is -1/x square. Similarly, one part of the question is over. P is over. Q. Partial differentiation of s with respect to y. That is equal to here. With respect to y, carry the y becomes 1. X left off. X minus 64 by y square now. Because we are doing with respect to y. Now next to PQ के बाद R. Means we have to differentiate this value of s with respect to x 2 times. That will becomes, इसमें तो x नहीं है, 0 हो जाएगा। 64 as it is -1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2/x क्यूब। यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। d/dx ऑफ ये 1/x अगर करें, that answer is -1/x square, and d/dx of, if you want to do it 1/x square, that is -2/x cube. That continuing the class. Respect to x means -1/x square का -2/x cube, minus into minus plus। ये 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पर एक सेकेंड। Okay. Hello? Hello? Hello, yes, sir. Okay. So let us continue. With respect to x 2 times means it's a 128 by x cube. PQR is over S means S x with respect to y. X with respect to y means x तो यहाँ पे है with respect to y. Y का differentiation with respect to y becomes 1. Then T S double y. Y one more time. Yeah, यहाँ पे -1/y square का 2/y cube means 128 by y. Okay. तो ये हो गया PQRST। अपना स्टेप नंबर 1 हो गया। Step number 2, equating P and Q to 0. That we have to write. Equating P and Q. P and Q to 0. Equating P and Q to 0. Here we have P value. देखिए अच्छे से, y minus 64 by x square is our P value that we are equating to 0. And comma Q value is x minus 64 by y square is equal to 0. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का लॉजिक देखिए जरा, ठीक है। y Yes, sir. minus, if you bring that side, becomes 64 by x square. Okay. And same story.
x is equal to, if you bring that side, 64 by y square. एक काम करना, ये जो 64 by x square वैल्यू है, ये x square यहाँ से यूज कर लेना. अभी कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू. Now, this is y minus 64 by, not y minus, y is equal to 64 by x square. यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती, क्या आ जाती, 64 by y square whole square. So if you simplify this one, we are getting y is equal to this 64 numerator wala as it is, denominator 64 whole square can be written as 64 into 64, and this is y square whole square, y power 4 ये numerator में भिजा देंगे, and one term will be cancelled in cross multiply. 64y is equal to y power 4. Okay, and if you bring that side, 64y minus y power 4 is equal to 0. And if you take y common, we get 64 minus y cube is equal to 0. So therefore, two cases arises. Case one is y is equal to 0 is one case. And minus, if you bring that side, becomes plus. 64 is equal to y cube. 64 can be written as 4 power 3. 4 into 4 into 4 is equal to y cube. This 3 with this 3 cancel. It means y is equal to 4. So finally, what we want to say, if you simplify this part, first answer, we are getting our one answer is y is equal to 0, y is equal to 4. अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अपन लिखेंगे सिमिलरली. If you solve another part, we will get x is equal to 0 and x is equal to 4. It means finally how many stationary points we have, that one we have to write it. Finally, how many stationary points we have, you can see there. Look at the stationary points are stationary points are देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए x0 y0, this is x0 y0, first combination. Next, when x is 0, y is 4, when y is 0, x is 4. So 0 comma 4, 4 comma 0. Okay, and finally when x is 4, y is 4. So this is a stationary point. अब देखिए, we have to calculate rt minus s square. RT minus s square value we have to calculate. RT minus s square, which is equal to RT. R is here 128 by x cube into T value is 128 by y cube. Minus s square. S value is 1 square. This is 1 square 1 only. Now if you substitute one first point, अब देखिए ऐसा कोई बॉक्स बन सकता है जिसमें लेंथ भी 0 है, ब्रेथ भी 0 है? नहीं बन सकता ना? Yes. Is it any? Yes, sir. Because it is x, it is y. So we should not get any box where we don't have length, we don't have breadth. ऐसा तो नहीं हो सकता. इसमें लेंथ 0, ब्रेथ 4, ऐसा भी कोई बॉक्स नहीं हो सकता. इसमें ब्रेथ 0, लेंथ और ब्रेथ 0 हो सर के बॉक्स तो बन सकते नहीं. मतलब only one possible point is 4 comma 4. This one we have to substitute here. At only one point 4 comma 4. So 4 power 3 is 64. So it is becomes 128 by 4 power 3 is 64 into 128 by 4 power 3 is 64
minus 1. 64 ones are twice it is cancelled. 64 ones are twice it is cancelled. 2 twos are 4 minus 1 is 3. 3 means definitely what do you say? It is greater than 0. और r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना इमीडिएटली. r is equal to we have 128 by x cube. वही सेम पॉइंट पे एट 4, 4 पे अगर आप देखें 4, 4 मतलब x की जगह पे 4, y की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट we get 128 by 4 power 3 64. So if you cancelling out 64 ones are 2s are, we get our answer is 2, which is greater than 0. Both value is greater than 0 means function is minimum. Minimum matlab least मतलब least material is required. So therefore, what do you say? Function is minimum. The function is minimum at 4, 4. अब इसके डायमेंशंस भी आपको फाइंड आउट करना है. Now dimensions are dimensions of the box. तो फाइनली अपने को बॉक्स के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? यहाँ पे x आ गया आपको 4 मतलब x किसको बोल रहे हैं अपन यहाँ पे देखिए आप x किसको बोल रहे हैं? व्हाट डू यू से? x इज ए लेंथ. So length is 4 feet and y is 4 feet. Okay, and if you put x and y value together, where? Here. यहाँ पे अगर आप रखें इसमें, if you put x is equal to 4, y is equal to 4, 4 4 is 16. 32 by 16 is what? Z is equal to 2 feet. So these are the dimension of the box. मतलब कम से कम मटेरियल मतलब लेंथ अगर 4 फीट, वाई 4 फीट, ब्रेथ 4 फीट और हाइट अगर 2 फीट लिए तो कम से 32 क्यूबिक फीट का अपन एक बॉक्स बना सकते हैं. मतलब सीधे सीधे वर्ड्स में अगर बोले तो मिठाई का डब्बा का निचला हिस्सा, मिठाई के डब्बे का नीचे वाला बॉक्स, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला बॉक्स फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन प्योरली इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है. अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए. मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर आई विल ट्राई टू डू इट वन मोर क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है. कुछ डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है तो लेट मी डू इट वन मोर क्वेश्चन. वी हैव अ टाइम, वी कैन डू इट वन मोर. आई विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज. एक और क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. ठीक है ना? The question is है divide 24 into 3 parts. 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, 3 पार्ट्स such that, कैसा? such that the continued product of the first comma square of the second and cube of the third is maximum. क्या है? क्या लिखेंगे?
cube of the third is maximum. This is the problem. Now we can see the solution of this one. Yes. तो मतलब क्या करना है आपको 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सपोज ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, इसका आंसर 24 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये ये सपोज फर्स्ट पार्ट एक्स है, सेकंड पार्ट वाई है, थर्ड पार्ट जेड है. तो अपना कंडीशन कैसा है क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20. ओके, 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, तीनों पार्ट्स. What I want to do it here is again like a previous question. I don't want z. Z को मैं सब्जेक्ट बना दे रहा हूँ. That is becomes 24 minus 6 minus 1. 10 मिनट में क्लास हो जाती है. आ जाए. तो our function value क्या होती है देखिए हम. Function of x y z. यहाँ पे एक और कंडीशन देखिए आपको क्वेश्चन में. Continued product ये वर्ड यूज करा. Product of the first, square of the second and cube of the third. Product of first, square of second, cube of third is maximum. ये हो गया आपका फंक्शन. अब अपना काम करेंगे, इससे पहले एक और स्टेप करेंगे. एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज. Z value is we have what, 24 minus x minus. So we shall simplify these two. It means we have to multiply this one with the 24. This is 24 of x cube y square minus, this is x to the power of 4 into y square minus, this is x cube y, x cube y. ये आपका function value f. Now we can start our regular work, that is p value. Find out p value means partial differentiation of f with respect to x. That is equal to, with respect to x करना है देखो, x cube का differentiation होता 3x square, इसका x cube का 3x square. Those three we multiply with what, 24 means it's a 72 x square y square. ये first हो गया. And x power 4 differentiation is 4x cube. So 4x cube y square minus differentiation of x cube is 3x square into y cube as it is. With respect to x तो हो गया cube with respect to y square का 2y मतलब 24 to the 48 x cube y minus y square का 2y मतलब 2x power 4y minus y cube का 3y square मतलब 3x cube y. p हो गया, q हो गया, r means with respect to x 2 times. ये x square का 2x, 2 into 72 is becomes 144 xy square xy square minus ये यहाँ है x cube का 3x square मतलब 4 3 जा 12 x square y square. Now differentiation of x square is 2x means 6x y cube. ये हो गया p q r s means differentiation of fx with respect to y. X का with respect to y square का 2y means it's a 144
एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर का 2y मीन्स 8 एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस वाई क्यूब मीन्स 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर मीन्स 9 एक्स स्क्वायर वाई पी क्यू आर एस लास्ट में एक और टर्म रहता टी मतलब एफ डबल वाई दिस इज इक्वल्स टू वाई को एक और बार करना है वाई का 1 हो जाता मतलब 48 एक्स क्यूब इधर बचता ये वाई का 1 हो जाता मतलब -2 x⁴ हो जाता ये वाई स्क्वायर का 2y मतलब 6 एक्स क्यूब इंटू वाई पी क्यू आर एस के आने के बाद इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू जीरो का स्टेप इक्वेटिंग इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू जीरो इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू जीरो पी की वैल्यू यहाँ पे जीरो से इक्वेट कर रहे हैं 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो अब इसमें से कुछ कॉमन आते हैं पूरे टर्म से क्या कॉमन आते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रही है सब में है देखिए देन लेफ्ट ऑफ इज 72 तो इसमें बच गया एक्स स्क्वायर वाई बाहर ले लिए इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर ले लिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल गो दैट साइड becomes x zero एक केस x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो ये माइनस को भी उधर भेजा दिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 72 ये अपना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है सेम स्टोरी अगर आप q इक्वेटिंग टू जीरो करें देखिए यहाँ पे q है 48 एक्स क्यूब ऑफ वाई माइनस 2x⁴ इंटू वाई माइनस 3 x क्यूब वाई स्क्वायर now equating to zero we can take x cube into y only common मतलब x cube y सब में देखा यहाँ बच गया 48 माइनस एक्स क्यूब और y बाहर चले गया मतलब यहाँ पे कितना बच गया 2x बच गया था और यहाँ पे बच गया 3y इक्वल टू जीरो फिर इसमें वही केस अराइज होता है x जीरो y जीरो we will bring that side minus also we begin bring these two values that side becomes plus 2x plus 3y is equal to 48 अब ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो यू विल गेट वन स्टेशनरी पॉइंट तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो करेंगे अलग पेन से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 72 ये सब कर रहे हैं अपन स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 नाउ वी चेंज द साइन माइनस 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 कैंसलिंग दिस टू ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 माइनस 48 बिकम्स कितना होता 1 6 24 मतलब x इज 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा मतलब x इज इक्वल टू 12 आ जाता x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए आप यू विल गेट y इज इक्वल टू 8 हियर y इज इक्वल टू 8 हियर so when x is equal to 12 and y is equal to 8 these points and now we have to decide the stationary points अब अपने जो स्टेशनरी पॉइंट्स आते ये x0 y0 फर्स्ट पॉइंट आता ठीक है ना जहां भी x0 y0 है वो काम का पॉइंट है नहीं अपने ये पॉइंट्स अपने x0 देखिए x0 अगर y0 हुआ तो सम 24 हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना सम 24 मतलब एक इस वैल्यू को जीरो को आप कैसे ले सकते
तो आप क्या हम करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर वैल्यू ये है, देखिए आर वैल्यू कहाँ पर, ये 144 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, एक काम करेंगे, इसलिए लाइन से लिख, यहाँ से लिख 144 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई क्यूब, ये आर हो गया, इंटू टी, टी इज 48 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब वाई, ये हो गया टी माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर मतलब 144 एक्स स्क्वायर वाई, मैं यहाँ से हैसो वैल्यूज को लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं ले रहा, 8 एक्स क्यूब वाई माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टोटली होल स्क्वायर, और ये वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है एट द पॉइंट डायरेक्टली 12 कामा 8 पे अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करें आप, मतलब इसके अंदर एक्स की प्लेस पे 12, वाई की प्लेस पे 8 रखे, तो यू विल गेट योर वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर वैल्यू, दैट इज, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा हूँ मैक्सिमम है बोल के, मतलब एक ग्रेटर देन जीरो आती, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती, और आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू, दिस इज आर इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट पे अगर आर की वैल्यू करें तो लेस देन जीरो, तो एक ग्रेटर देन जीरो, एक लेस देन जीरो, तो फंक्शन क्या होता, फंक्शन होता मैक्सिमम, therefore the function is the function is, अभी ये भी अपन एट 12 8 पे कर रहे हैं, फंक्शन इज मैक्सिमम एट 12 8, फाइनली अपने को एक्स वाई जेड के वैल्यूज चाहिए, एक्स आपको मिल गया 12, वाई आपको मिल गया 8, जेड के लिए यहाँ पे जाएंगे 24 माइनस एक्स माइनस 1, 24 माइनस एक्स इज 12, वाई इज 8, so then if you simplify 24 minus 20 मतलब 4, ये finally x is 12, y is equal to 8 and z is equal to 4 are the numbers, मतलब 24 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करो बोला, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड करें, 24 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24, ऐसे तीन नंबर अपन फाइंड, ठीक है ना। तो ये थी आपकी क्लास, मैक्सिमम मिनिमम अपन खत्म कर दिए, और कल से मैं एक टॉपिक शुरू करूंगा, आपको व्हाट्सएप पे एक बार आपको सिलेबस देख के, हो सकता है कोई और गर्ल्स स्टूडेंट ही आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज।